हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी में मेंटेनेंस जो प्रोविजन है वो क्यों है, किसके लिए है और कैसे ये एप्लीकेबिलिटी एनफोर्समेंट होता है, तो उसके डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो मैं 6 स्टेप में डिस्कशन करने वाला हूं। पहला तो इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद स्कोप ऑफ द सेक्शन ऑफ सीआरपीसी 125 होगा, उसके बाद हु कैन क्लेम द मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी, नेक्स्ट फीचर्स ऑफ द सेक्शन 125 सीआरपीसी, उसके बाद क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस, एनफोर्समेंट ऑफ सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, उसके बाद कंक्लूजन। ये 6 स्टेप में हम पढ़ेंगे आज। तो लेट स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी इज मीन टू प्रोवाइड ए स्पीडी, expensive and effective remedy against person who refuse or neglect their duty to maintain persons depend on them। तो इसमें से तो हमको क्लियर हो गया, ये उनके खिलाफ है जो रिफ्यूज करता है और डिनाई करता है उनके जो डिपेंडेंट है उनको मेंटेन करने के लिए। द section discharges a social function in order to achieve and maintain social balance। ये बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि सोसाइटी में इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए, डिग्निटी मेंटेन करने के लिए ये बहुत ही जरूरी कदम होता है। It also comes under Article 15(3), which further reinforced by Article 39. It is an important section that deals with women's human rights and are a legal instrument of a social relevance that is used to uphold the rights of the weaker section of a society. They are in a way aimed at preventing starvation and vagrancy relating to the commission of a crime। ये बोलता है, ये also related है आर्टिकल 15(3) को। आर्टिकल 15(3) क्या बोलता है उसको हम डिटेल में डिस्कशन कर ही लेते हैं। तो आर्टिकल 15(3) बोलता है, नथिंग इन द आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। तो ये जो स्टेट जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है, स्टेट गवर्नमेंट का जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटी एंड राइट्स रहता है, तो उसमें ये फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से आता है। स्टेट गवर्नमेंट को वो ये सब उनकी वेलफेयर के बारे में, वुमेन और चिल्ड्रन की वेलफेयर के बारे में कानून बना सकता है। और साइमल्टेनियसली लिंक्ड विथ द आर्टिकल 39, what Article 39 says is certain principles of a policy to be followed by the state. The state shall in particular direct its policy towards securing। तो ये सारे सबको सिक्योरिटी देना, सिक्योर करना, ये पॉलिसी के अंदर आता है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल मैंने बोला है स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसको वो बना सकता है। That the citizen, men and women, equally have the rights to an adequate means to livelihood। तो ये सबको जीने के लिए समान अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि एक जन अगर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, अगर वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो इक्वालिटी नहीं रहेगा, उनको कोई ना कोई मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसलिए ये राइट इक्वालिटी की बात करता है। देख लेते हैं स्कोप ऑफ सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। मेंटेनेंस अंडर दिस लॉ इज डिफाइंड एज एन अकाउंट ऑफ मनी पेड टू ए डिपेंडेंट पर्सन सच एज वाइफ, चाइल्ड और पेरेंट, सो दैट दे कैन सपोर्ट देमसेल्फ फाइनेंशियली। इतना तो समझ में आ गया। इट इज ऑल्सो डिफाइंड अंडर section 2 subsection B of the Maintenance and Welfare of Parent and Senior Citizen Act 2007।
ये जो सीआरपीसी में लिया गया है, इसका ऑल्सो इसको कनेक्ट करता है, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट जो है 2007 में बनाया गया था उसको। As it terms includes provision, food, clothing, residence and medical attendance and treatment, it include, क्योंकि अगर इक्वालिटी लाइवलीहुड में इक्वालिटी नहीं रहेगा तो किसी को खाना मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। इन दैट केस क्या हो जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी कि जिसके पास है तो बहुत है और जिसके पास नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह का हमको सस्टेन करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। तो इसका हु कैन क्लेम द मेंटेनेंस, जैसे हम इसमें ही बोल दिया गया स्कोप में कि बच्चे, पेरेंट और वाइफ ये क्लेम कर सकते हैं। एनी वाइफ वेदर ए माइनर और मेजर एज who is unable to maintain herself is entitled to maintenance under section 125 subsection 1 a, according to explanation जो हमने explanation किया है, wife under the section includes the unmarried, divorced wife earlier till the judgment in this सावनो केस में हमने देखा होगा। A divorced wife was not entitled to maintenance and this caused a lot of justice to women, especially of the Muslim community. तो ये अगर डिवोर्स है तो ये नहीं मिल सकता है। There are manners where this maintenance can be expected under section 4 of section 125 of CRPC. The courts needs to ensure that the husband has sufficient means to maintain his wife. If he does not, then this section does not apply. Furthermore, the wife should not be living in the adultery separately unless, according to the court, her refusal to live with the husband is justified. This applies even if the separation is mutual. If a marriage is void or annulled under section 12 of the Hindu Marriage Act, a wife is not entitled to maintenance. इसमें क्लियरली बोला गया है, एक तरफ वो सेक्शन बोलता है कि मेंटेनेंस आपका हक है, राइट्स दिया गया, इधर मेंटेनेंस के लिए ये बोल देता है कि सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 125 सेज आपको हस्बैंड के साथ रहना पड़ेगा। ऐसा कुछ है नहीं रहने के लिए बाध्य करता है, वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप वाइफ हो और आप निकल जाओगे और मेंटेनेंस मांगने लगोगे, कोई जस्टिफिकेशन रीजन नहीं होगा। इसमें ये क्यों बोला गया, एक तो वो फैमिली डिस्टर्ब हो रहा है, हस्बैंड की फैमिली, जिसको आपने वाइफ ने प्रॉमिस किया था ड्यूरिंग द मैरिज कि मैं आपका फैमिली का देखभाल करूंगी। तो ये जो डिस्टर्ब हो रहा है उस केस में आपको मेंटेनेंस करना बाध्य नहीं है, अगर जस्टिफाइड या वैलिड रीजन ऑफ सेपरेशन रहने का है नहीं तो मेंटेनेंस आपको नहीं भी मिल सकता है। तो चाइल्ड, सिमिलरली चाइल्ड, ये तो वाइफ के लिए हो गया। चाइल्ड, a child who is still a minor according to Indian Majority Act 1875, person who has not attained a age of year 18 years, यानी एडल्ट जब तक नहीं हो जाता है वो माइनर चाइल्ड रहता है। whether they are legitimate or illegitimate or married or unmarried are entitled to claim maintenance under section 125 subsection 1b. Furthermore, if a minor girl's husband is unable to support her, then the father
of such a girl is required to maintain her according to the provision in this section. तो इसमें सीधा सीधा बोल दिया गया, अगर हस्बैंड कैपेबल नहीं है, उनका सोर्स ऑफ इनकम उतना नहीं है मैनेज करने के लिए, तो इन दैट केस ऑब्लिगेशन ऑफ द फादर इज टू मेंटेन हिज डॉटर. तो ये करना पड़ेगा. चाइल्ड हैज टू हैव बीन बोर्न फॉर सच ए क्लेम टू एग्जिस्ट मेंटेनेंस ऑफ ए fetus when the woman is still pregnant does not comes under this section. Even in this case where the child is under someone else's custody, the father of such child still has the obligation to maintain them. यानी कि ये बोलता है कि अगर कस्टडी भी दूसरे के पास है, पेरेंट का ऑब्लिगेशन रहता है वो उनको मेंटेन करने के लिए. The maintenance of a child under this section is based on the paternity. This is irrespective of legitimacy or illegitimacy or the child. Therefore, a child whose parents are not legally wedded is still entitled to maintenance by law. If paternity cannot be established, then the child has no claim. The child may be adopted or natural born. After attaining majority, a child, whether legitimate or illegitimate, as long as they are a married daughter, can claim maintenance under section 125 subsection 1C by reason of physical or mental abnormality or injury, and the child is unable to maintain themselves pertaining to such reason. A major unmarried daughter not suffering from any mental or physical ailment cannot claim maintenance under section 125. जो भी हो, लेजिटमेट हो या इलेजिटमेट हो, अगर वो मेंटली और फिजिकली फिट नहीं है, इवन इफ इज क्रॉस द limit of age, they are entitled to get maintenance. तो ये होता है. और वो पेरेंट क्या होता है, पेरेंट जो भी क्लेम कर सकते हैं, वाइफ गया, चिल्ड्रन गया, अभी पेरेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 सबसेक्शन 1D, a mother or a father who is unable to support themselves is entitled to claim maintenance under this section from the children. Although the word his is used, it applies to both male and female children of the parent. ऐसा नहीं कि लड़के से ही पेरेंट को मेंटेनेंस मिलेगा, लड़कियों से भी मिलेगा. Indian society cast a duty on the children to maintain the parent, and his social obligation applies equally to the daughter. Daughter को भी applicable है, वो भी उनका responsibilities बनता है वो मेंटेन करने के लिए. फीचर्स क्या क्या रहता है हम डिस्कशन करेंगे. फीचर सिग्निफिकेंस मीन्स टू मेंटेन, सफिशिएंट मीन्स टू मेंटेन. It is the most fundamental condition that order of the maintenance against a person can be based only if he or she themselves have a sufficient mean to maintain. The person who has the claim and neglect or refuse to do so, as stated by Delhi High Court, it means that the long as a man is healthy and able bodies, he is held as being possessive of the means to support his family, and he cannot be relied on of such obligations simply because he is
unemployed, in debt, or insolvent, the burden of proof is on the person claiming that he has no sufficient means to maintain. Here, the burden of proof is on person claiming that he is not sufficient means to maintain. जिस पे डिपेंडेंट है या तो बच्चे पेरेंट बच्चों से है, वाइफ हस्बैंड से है, तो ये सभी बर्डन ऑफ प्रूफ करना है जो क्लेम कर रहे हैं उनको, दैट दे आर नॉट मेंटेनेबल, दे आर देमसेल्फ इज नॉट एबल टू मेंटेन देमसेल्फ। तो ये प्रूफ कर दिया तो सिग्निफिकेंट मीन्स ऑफ मेंटेनेंस हो गया। देन नेग्लेक्ट एंड रिफ्यूजल टू मेंटेनेंस, जैसे हम बोले हुए हैं, नेग्लेक्ट इज यूज्ड टू मीन ए फेलियर टू मेंटेन इवन व्हेन नो सच डिमांड is made against the maintainer. The term basically means a discharge of a duty which could be either willful or intentional. तो ये है नहीं कि जो ऑब्लिगेशन है, जो नेग्लेक्ट है कि सामने वाला डिमांड नहीं किया तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि अगर भी सामने वाला डिमांड नहीं किया तो भी हमारा ऑब्लिगेशन रहता है हम उसको मेंटेन करें। The claimant must be unable to maintain himself or herself. ये जो बहुत सारे हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस को भी रिजेक्ट किया गया, क्योंकि मेंटेनेंस जो होता है वो क्लेमेंट जो क्लेम करते हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम होता है, वो मेंटेनेंस हो पाते हैं फिर भी वो मेंटेनेंस क्लेम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑन one of the essential of a wife to claim maintenance is her inability to maintain herself. She does not have a specifically plead that she is unable to maintain herself, but in Karnataka High Court cases, the court held that if the wife is healthy and of a quality education and still unable to maintain herself, then she can still claim maintenance, but these facts will affect the amount awarded. तो अगर भी एजुकेटेड है और जॉब नहीं कर रही है फिर भी वो मेंटेनेंस का हकदार है, लेकिन कितना देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर। क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस मीन्स कितना अमाउंट का मेंटेनेंस देना है। द मैजिस्ट्रेट was required to award maintenance. There is no limit set for the maximum amount. It's left off to the magistrate to fix a monthly rate as he or she may deem fit for the case. The rate has to be fixed and determined and not progressive increasing. However, it can be altered from time to time according to the section 127 of CRPC. If the wife and child are both claimant against the same person, then it is not within this section to award them a joint payment. Each one has a separate claim which may be awarded as such enforcement of a section 125 of a CRPC. अगर भी husband, daughter और son along with the wife अगर मेंटेनेंस क्लेम किए हैं तो मैजिस्ट्रेट उनके हिसाब से वो ऑर्डर करेंगे। तो ये अभी महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट चीजें हैं। There is two mode of enforcement of the section listed under subsection 3, which are कैसे इसको enforcement किया जाएगा। Warrant for fine, imprisonment may extended to 1 month until payment is made. If after the warrant, if part or whole of the amount remains unpaid.
तो ये वारंट फाइन, जो डिस्ट्रेस वारंट बोलते हैं उसको, वारंट इशू हो जाता है तो वो फाइन के हिसाब से वो लिया जाता है। और अगर नहीं देता है ये 1 महीने की सजा भी हो सकता है। ये then we will have to be discuss the conclusion. The objective of the section 125 of a CRPC is to protect the rights of a defendant person who find themselves in the harsher position than other and do not have the mean and resources to maintain themselves. It has usually been the wife, children's, and parent in such matter. However, since the social aspect weighed heavy on the instrumentally of the section, it becomes important for the court to consider the fact on the case-to-case basis and ultimately remain vigilant that justice is done to all parties. It is important that the changing cultural fact and dynamic be taken into consideration while moving forward. So far, the interpretation made by Supreme Court have been fairly liberal and flexible, and the manner of the decision of by High Court have been slightly different, but it only displays that the cultural and social aspect plays out differently in different regions, and it should be left off to the wisdom of the court in such matters unless otherwise required. ये रमेश चंद्र कुशाल वर्सेस वीणा कुशल के मैटर में बोला गया है। ये AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट 1807 में जजमेंट दिया गया। इसमें कंक्लूजन में हम कंक्लूड हुए कि वाइफ, चिल्ड्रेन, पेरेंट कैन गेट देयर मेंटेनेंस, और अगर वो मेंटेन नहीं हो पाते हैं तो मैं एविडेंस एक्ट और CRPC का एक क्लास ले रहा हूं। पहले CRPC का लेता हूं, फिर बाद में एविडेंस एक्ट का भी ले लिया जाएगा। तो इसमें आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाया जाएगा। इसका क्लास 1 घंटे डेली होगा 30 डेज के लिए। इवनिंग को 9 to 10 PM होगा। इसमें सारे क्वेश्चन आंसर दे दिया जाएगा आपको। MCQ क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा ताकि आप आंसर देंगे तो आपका जो स्टडीज, क्वालिटी ऑफ स्टडीज बढ़ जाएगा आपका। देन आपको नोट्स दे दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम, अगर आप LLB स्टूडेंट है, LLM है, कि जुडिशियरी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या तो आप लॉयर है, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। हाउ टू रीड द बेयर एक्ट मैं बता दूंगा, प्रोविजन को कैसे याद करना है, और सीक्वेंस टू रीड द सेक्शंस ये भी बता दूंगा। अगर ये मैकेनिकल है या टेक्निकल है, अगर आपको लगता है ये बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझा दूंगा आपको, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज एनरोल ऑन दिस वेबसाइट so that we can meet at the live online class. Thank you very much.